Hello students, my name is Sachin Ugale and we are discussing a chapter of electrochemistry. Okay, तो इस चैप्टर में हमने अब तक देखा है कि सेल क्या होता है, देन हाफ सेल हमने देखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड्स क्या है, देन उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, लेकिन इसका जो बिगिनिंग का जो पार्ट है वो हमारा डिस्कस करना बाकी है। तो आज के लेक्चर में जो है हम वो बिगिनिंग का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। So we know that what is meant by electrochemistry. So electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with the interconversion of chemical and electrical energy. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है उसका जो कन्वर्जन करते हैं हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हम केमिकल एनर्जी में करते हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ रिएक्शंस भी स्टडी ऑलरेडी किया है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जो उसका इंट्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस से डिलीट किया है, तो हम डायरेक्टली गोज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज ट्रांसफर। तो करंट में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। ओके, a charge transfer or flow of electricity occurs through substances called conductors। यानी कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, जिसमें से चार्ज ट्रांसफर होता है या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हम उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्शंस, दैट इज द वन इज मेटालिक कंडक्शन एंड अदर इज आयोनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सो व्हाट इज मीन द मेटालिक कंडक्शन? The electrical conduction through metals involves a direct flow of electrons from one point to other। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मेटालिक कंडक्शन। अब जो मेटालिक कंडक्शन है दैट इज मेनली रिलेटेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। ओके, जो एटम मेटल रहता है, मेटल का जो एटम है उसमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज मोस्टली इन्वॉल्व इन दिस मेटालिक कंडक्शन। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मोस्टली इन्वॉल्व्स इन मेटालिक कंडक्शन। अब जो आयोनिक कंडक्शन है दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम योर दिस ईयर्स सिलेबस। सो नेक्स्ट टू दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन? उससे पहले हमको थोड़ी सी टर्म्स पता होने चाहिए, दैट इज ओहम्स लॉ। नाउ वी नो दैट ओहम्स लॉ is V is equal to IR, or in other way we can say that R is equal to V upon I. Okay, so this is the Ohm's law. Then next to that, electrical conductance which is shown by capital G. Okay, G is equal to 1 divided by R, or a reciprocal of resistance. वी कॉल्ड इट एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब ये जो टर्म्स है वो आगे हमको कंडक्टिविटी के लगने वाले, सो यहाँ पे हम क्लियर करके लेते। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया A। दस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पे L जो है, यहाँ पे L क्या है, इट इज अ length of a conductor and A is a area of cross section. A is a area of cross section. Okay, next to that is conductivity. Okay, conductivity. Now what is mean by conductivity or how it is calculated? We have seen that is G is equal to 1 upon R. Okay, अभी हमने देखा था G is equal to 1 upon R, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो वी गेट अ फाइनल इक्वेशन, दैट इज G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाय L। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो दो इक्वेशन हमने अभी देखे, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G एंड ओहम्स लॉ। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमको मिलता है G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A upon L, और G is equal to K into A upon L, where
K is a proportionality constant and it is called as conductivity. Now G is equal to K. Okay, G is equal to K. That means electrical conductance G is equal to K, is equal to K, that is conductivity. यानी के electrical conductance is equal to conductivity, but only when the length and the cross section area of a conductor are unity. अगर length L and A जो है the area of cross section ये जब unity रहेगा तब G is equal to क्या आएगा, K. Okay, next to that is molar conductivity. Now what is meant by molar conductivity? First of all, it is denoted by a symbol lambda. Okay, it is denoted by a symbol lambda. और जो सिंबल है वो इनवर्स v जो रहता है उसके अगर हम उल्टा करें तो जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा. नाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी is not suitable for comparing conductivities of different solutions. The conductivity of a solution depends on number of ions present in unit volume of a solution. यानी के कंडक्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन. यानी कि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हमने कंसिडर किया तो उसमें जितने आयंस रहेंगे उस पे डिपेंड रहेगी. ओके, the solutions of higher concentration contains more ions and exhibits higher conductivity than the solutions of lower concentration. To compare conductivities of different solutions, they must have to the same concentration. अगर उसके कंपैरिजन करना है तो उसका क्या होना चाहिए, सेम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं. The molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration C. यानी कि lambda is equal to K upon C. So this is the molar conductivity. Now next to that is a relation, that is a relation between K and lambda. Okay, so its relation of K and lambda is equal to lambda is equal to kV. Lambda is equal to kV. Okay, this is the main relation between them. Next to that, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि कंडक्टिविटी जो है उसका वेरिएशन विद द कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा उसके बारे में. सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन. अगर दैट मीन्स इफ यू कंसिडर अ यूनिट वॉल्यूम, ओके, यूनिट वॉल्यूम में कितने करंट कैरिंग आयंस रहते हैं उस पे वो डिपेंड रहती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन द सेकेंड थिंग, ऑन डाइल्यूशन total number of ions increases as a result of increase in degree of dissociation. Okay, then next to that, the number of ions per unit volume of a solution decreases. This results in the decrease of conductivity with decrease in the concentration of solution. In this way, the variation of conductivity with the concentration. Then next, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. इससे पहले हमने जो देखा दैट वाज द ओनली कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन. नाउ वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेशन. The molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. That means अगर कोई solution का given volume है और उसमें 1 mole of electrolyte है तो at that time whatever conductivity is there, that is known as molar conductivity of a solution. तो पहले हमको ये पता होना चाहिए what is meant by molar conductivity. I'll repeat once again. The molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. Okay, then the second one,
The increasing number of ions produced in solution by 1 mole of an electrolyte lead to increase the molar conductivity. Next to that, that is variation of molar conductivity with the concentration. Okay, concentration, that means generally depends on the strong electrolyte and weak electrolyte. How it is related with the strong and weak electrolyte? For the strong electrolyte, the molar conductivity of a solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. It approaches the limiting values for 0.001 molar or 0.0001 molar solution. The dilution has no effect on molar conductivity thereafter. यानी कि इसके बाद हम जितना भी डाइल्यूशन करेंगे तो वो जो है दैट विल नॉट अफेक्ट ऑन द मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसके बाद जो है वो ज़्यादा कितना भी डाइल्यूशन करे तो भी वो मोलार कंडक्टिविटी पे अफेक्ट नहीं करेंगी. ओके, द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ मोलार कंडक्टिविटी इज द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, जीरो कॉन्सेंट्रेशन. सो we get the final formula from that, that is lambda is equal to lambda 0 minus a in square root c. Okay, this is the final formula from that. Then weak electrolytes, for the weak electrolytes also the molar conductivity of weak electrolyte increases rapidly on the dilution for the concentration of 0.001 molar or 0.0001 molar and the value of lambda is lower than lambda 0, the molar conductivity at 0 concentration. Okay, now next to that, that is Clorsuch law of independence migration of ions. Okay, KOHLRAUSCH, that is Clorsuch law. Okay, the law states that at infinite dilution each ion migrates independent of co-ion. Co-ion means उसके साथ जो दूसरा आयन है वो, that is co-ion, and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ions to which it is associated. Okay, it is associated, and from that we get a formula, that is lambda 0 is equal to n plus, or n, that is a plus is a charge, n plus then lambda 0 at the base plus n minus, that is for anions, n minus lambda 0 minus. Okay, so this is the formula from that. Next to that, that is applications of theory. Okay, अभी इस theory की क्या application है? The theory can be used to calculate the molar conductivity of an electrolyte at the zero concentration. अगर concentration zero है तो हम क्या कर सकते हैं? molar conductivity उसकी calculate कर सकते हैं. And the second application is, the theory is particularly useful in calculating lambda 0 values of weak electrolytes from those of strong electrolytes. These are the main applications of that theory. Now next, that is molar conductivity and the degree of dissociation of weak electrolyte. So the degree of dissociation, that is denoted by alpha, degree of dissociation that is denoted by alpha of a weak electrolyte is related to its molar conductivity at a given concentration C by the equation alpha is equal to lambda C divided by lambda 0, where lambda C is a molar conductivity of a weak electrolyte at concentration C and lambda 0 is the molar conductivity at 0 concentration. Okay, these are the molar conductivity and degree of dissociation of a weak electrolyte. Next to that, that is
that is measurement of conductivity. So the conductivity of a solution can be determined from the resistance measurement by Wheatstone bridge. Now Wheatstone bridge means what, आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, measurement of resistance जो डायग्राम है, okay, it is also studied in the physics. जो वो सर्किट दिखाया है, that is known as Wheatstone bridge. Okay, in that conductivity cell. The first point is conductivity cell. The conductivity cell consists of a glass tube with two platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black. Okay, what it is? The conductivity cell consists of a glass tube. वो glass tube रहेगी with the two platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black. Okay, then the cell is dipped in a solution whose resistance is to be measured. यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. जो सेल है वो सेल किस में डिप करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है. यानी कि वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, वो देखा है कि बीकर है, उसमें बीकर में वो दो प्लेट जो है वो डिप किए, दैट इज दैट वन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल. देन सेल कांस्टेंट. The conductivity of an electrolytic solution is given by K is equal to 1 divided by R into L divided by A. Then cell constant is equal to L divided by A. Okay. Then K is equal to cell constant divided by R. So the determination of conductivity consists of 3 steps. जब हम एक करें कंडक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे, उसमें मेजर 3 स्टेप्स रहते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट. नाउ द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग द 1 molar, 0.1 molar or 0.01 molar KCl solution. Now how it is measured? The conductivity of KCl solution is well tabulated at various temperatures. Then the resistance of KCl solution is measured by Wheatstone bridge. Okay, so उन्होंने दिया है वो, तो क्या करेंगे हम, उसका रेजिस्टेंस भी देखेंगे. ओके, सो दैट इज द एट AB यूनिफॉर्म वायर. वो डायग्राम में जो आपने देखा था, दैट वाज द प्रीवियस डायग्राम. AB wire, that is Rx, is a non-variable resistance placed in one arm of the Wheatstone bridge. Okay, then the conductivity cell containing KCl solution of unknown resistance is placed in the other arm of Wheatstone bridge. D is the current detector. F is the sliding contact that moves along AB. AC represents the source of alternating current. यानी कि जो AC है, that is the source of alternating current. Then what is the next? The sliding contact is moved along AB until no current flows. यानी कि no current flows point जो है, हम उस पर वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे मूव करेंगे AB पे कि जहाँ पे हमको क्या दिखना चाहिए, नो करंट पॉइंट. ओके, नो करंट फ्लोज. द डिटेक्टर D शोज नो डिफ्लेक्शन. जो डिटेक्टर D जो है उसने क्या दिखाना चाहिए, नो डिफ्लेक्शन. दैट इज द नल पॉइंट. और द नल पॉइंट इज दिस इज ऑब्टेन एट C. सपोज हमको क्या मिला, C पे मिला वो नल पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू Wheatstone bridge principle, R solution divided by L, that is length of AC, is equal to Rx. R at the base, X Rx divided by length BC. Now this is the formula. Hence from this we can find out R solution, that is resistance of a solution, is equal to L of AC divided by L of BC into Rx. Okay, Rx. By using this formula we can calculate resistance of a unknown solution. The conductivity of KCl solution is known. The cell constant
Okay, that is known as the cell constant, thus can be calculated. In this way we can calculate the cell constant. Now next steps, that is determination of conductivity of a given solution. Okay, now how to determine the conductivity of a given solution. Now KCl solution in the conductivity cell is step 1 is replaced by the given solution whose conductivity is to be measured. Its resistance is measured by the process described in step 1. The conductivity of a given solution is then calculated as K is equal to cell constant divided by R of solution. Now next to that is calculation of molar conductivity. Now how to calculate the molar conductivity? The molar conductivity of a given solution is then calculated using a equation, that is lambda is equal to 1000 into K divided by C. In this way we can calculate the molar conductivity of a solution. So अब तक का ये जो हमारा पार्ट था वो हमारा डिस्कस करना बाकी था. तो यहाँ से आगे जो है that is the electrochemical cell, then the electrochemical reactions, electrodes, cathode, anode, types of electrochemical cells, ये हमने already discuss किया है. तो in this way we are mostly finish this chapter. So आज के लिए इतना काफ़ी है. The remaining part we will see in the next lecture.